Recording is started. Hi all, I'm Tushar Jijani. I'll be leading marketing cohort for the batch of 2024 to 2026 for my prep. A little about me: I have graduated from IIM Lucknow. I have a CFA L2 candidate and working in a strategy and finance role. Why I lead marketing? Because I love marketing. I love the roles that is being offered, and marketing was never was a aim or a target, but in my off time or out of office situation, I do read a lot about marketing. So it helps me to learn a lot about the consumer, D2C space, etc. So today we will be solving one of the case application that might be helpful in your case interviews or marketing case interviews. So let's get started. If anyone have any doubt, you all can reach out to me by raising your hand, and we'll strictly follow the queue. Or you can also wait till the last slide of the session. So let's get started. So what happens in a marketing cases are that it's very similar to what you do in consulting, but here the focus is a lot on the brand, a lot on the distribution, a lot on the customer. Consulting will also involve a lot of financial numbers, guesstimates, etc. But marketing is more of a taking all your intuitive things in picture and talking more about customers, more number of times talking and saying the word customer. So that is what it is marketing. And marketing, I am also assuming at the same time that you all have watched my videos on marketing. So the problem statement here is that a brand wants to launch a fitness tracker. So I assume that everyone is aware about the fitness tracker. So firstly, you being a brand manager, you don't go to a market, or you don't call your CEO, or you don't call your CFO that you need $100 million in your account because you wanted to start a new category in your business, which is fitness tracker. So how do you start solving this question is there is a step-by-step approach. So firstly, you will go and research a lot about your customers. So that will help you to define what is a fitness tracker. Why do we need a fitness tracker? Why do your customer? So here I'll be using we, I, or customer. Everything is customer. So customer is the center of all these discussions that we are trying to do in this case. So I'll be solving this case. So you all have to write the approach, and I'll assume that you will also follow the same approach in your exam. So understanding the customer needs. So what happens is you will reach out to your target audience. Target audience can be early, uh, from earlier, like young adults. Young adults are folks who are 17 to 21 or 22. Then you have adults which are 22, 25 to 35. Then you have uh, like senior adults, which is 35 to 45. And then have senior citizens, which are 45 or 52 above. Mostly what is happening in the D2C spaces, we are majorly targeting people from 17 to 35. So you will assume that, hey, fitness band would be assumed or used by folks who are from 17 to 35. So what happens is you will go to those folks and check why do they need a fitness tracker. So now you knowing about different brands which exist in the space is really important. For example, I know that Whoop is one of the brand, Xiaomi is one of the brand, Apple watches are one of the brand. So these are a few of the brands which do offer bands or your watches. And not knowing the differences also creates a lot of issue. You talking about band sometimes, and then you talking about watches sometimes will create an issue. So what you'll do, you'll go to your customer, do a thorough research that why do they need a fitness tracker and what are the uses that can be derived from a fitness tracker. So essentially, it started with you watching your uh, mobile notification and time. Then later on, folks added steps, then ESGs and etc. Now, one of the brand which is called Whoop, I'm sure you might have heard about it. If not, do search it after this call. So what happens is they do a sleep tracking, your
how much sleep you need, then what is the pressure on the body, and etc. So first step is to go and know about the customer, then noting down what are the things that a customer might need. So there will be definitely hundreds of things, but you cannot put everything in your own product. So you will do the classification of those things, and if possible, you'll try to create different products with for a different category if the category is huge. But that doesn't mean that you will have 10 watches. For example, right now the classification of an Apple Watch is that you have different colors, but that is not the case. That if you definitely there are one of the one is your higher end Apple Watch, which is Ultra, which is of 90K, but the middle or like there are 45 or 40, the cheaper ones. So what happens is that you cannot uh, give something which is unaligned with the brand story or unaligned with the product. You will try to maybe provide a better service or a accuracy better accuracy in a higher end product, but that doesn't mean that you'll go something extraordinary, that your screen is getting uh, expanded in a watch or something that is not making sense. So you will go research, know the needs of the customer, then classify them basis categories. That is the second step, but I'll try to explain it here. So what happens is when you will get those data, you will try to segment it. So what do we call by segmentation? Segmentation is identifying what is the most relevant to my target audience. So target audience I have already mentioned 17 to 35. Here we have assumed 70 18 to 45, but whatever your assumptions are not questioned most of the time, but the logic is definitely questioned. So I assume that my fitness brand will have also have a early adopters, which is 70. So I can justify that. But basis my slide, let's consider 18 to 45. So 18 to 45 who prioritize fitness and active living. So what things they do need in my product is maybe step counting, maybe ESGs, maybe sleep tracker, etc. So I'll try to categorize them basis the segmentation. Then I'll apply my second framework. So STP, does everyone know about what is segmentation, targeting, and positioning here? Just say yes on chat. Okay, I assume that everyone knows about it. First, what we'll do, we'll try to do the segmentation of those needs of the customer. Then, basis that, I'll try to target it. That this is my target audience. This is my non-target audience. So I'll leave it. For example, I assume that above 35 is not my target audience. I'll stick to 17 to 35. So let's assume 17 to 35 is my target audience. Then I'll go to them and position it. Ki basis their needs, this brand makes more sense. For example, if every one of us starts making 2.5 lakhs a month, Apple is a more positioned product than anyone else, any other brand. So this is you doing the segmenting, then doing the targeting, and then positioning your brand. So in this slide, we have discussed two steps. First is you understanding your current consumption and description of the customer. Second is applying STP. STP is nothing but your segmenting, targeting, and positioning. So these are the first two steps. Then after segmentation, how you will target, you will narrow down the target market to health conscious individuals. For example, you took surveys of 1,000 people, but only 20% are health conscious. Other folks are like just wearing a fitness brand as a tracker, fashion brand. And it happens a lot of time. But that is not your priority. You are specifically catering to those folks who are looking for a fitness brand and a fitness band as well. Okay, I guess brand and band is a little confusing. So let's assume always fitness watch. So Fit Life will go and cater their marketing efforts to appeal to a specific audience. For example, here Amit and Vinay is very fanatic about fitness. उनको स्टेप से मतलब है, उनको नहीं फर्क पड़ रहा कि भाई will I
get a green color band or something. So I am creating something which for Amit and Vinay, not for Vishaka and Bhavesh, who is like, yeah, यार मेरे को तो दिखना अच्छा है उसमें. Specifically added advantage है तो good है, मतलब a single product solving a few more problems is fine, but the core problem should be solved. So I'll target Vinay and Amit. Those are my target audience. I'll provide the relevant messaging features, as I have already mentioned, that resonates with the needs and preference. But over the time, after meeting the needs of Nikhil here and Amit, I'll put more features. I'll also try to take Vishaka and Bhavesh into the consideration that these folks like the black brand band or watch. So मैं black भी launch करूँगा. Then comes to your third, which is of your STP, is your positioning. So you'll begin with the research again and identify a gap in the market and establish a unique selling proposition. For example, right now, 45,000 is the amount that you need to pay to wear a good fitness watch. So you just assume that you will sell your product in tier 2 and tier 3 cities or tier D cities. Tier D cities are the outskirts. So you see that you have a 80 billion population there, and you want to, let's assume that you have a 100 million population in those tiers, and you want to position your brand which is cheaper but valuable, value for money. So you bases your research, you start positioning your unique selling proposition that it's value for money with a tagline that fit life, empowering your fitness journey at a lower cost, to emphasize the brand commitment to provide the users a tool a tool to provide insight which is very helpful to achieve goals. So simple है, position कैसे कर रहे हैं हम लोग? By how are we doing positioning of our brand? It's value for money, it's cheaper. That's why we are targeting tier 2, tier 3. Tier 1 में नहीं जा रहे हैं कि where the people have already having a very deep pockets and they can easily buy Apple. So this is your STP. The third, again, the continues is your positioning. So after you deciding a brand story, you will also evaluate what your competitors are doing. So if all Apple is already there in the system, you won't go and just start selling your product for 45,000. You know that your product should be at a cheaper range basis the need. You will also evaluate whether you want to sell it as a product or a service. For example, in market right now, there are two models. One is subscription model. Second is your product model. What do you mean by product or a service model? Service or a subscription model? Subscription model is nothing but you paying X amount per month. So Whoop is a subscription model. इंडिया में सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं चलता. मतलब बैन नहीं है, बट वो फ्लॉप हो जाता है, सॉरी टू से, बट बहुत कम ब्रांड्स का सब्सक्रिप्शन मॉडल चलता है. बट अगर यूएस जाओ तो यूएस में आईफोन भी सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलता है वहां पे. तो मॉडल वगैरह डिसाइड करना है बेसिस द कंपटीशन एंड बाय एड्रेसिंग द फैक्टर्स सच एज मार्केट शेयर, प्राइसिंग, फीचर्स, कस्टमर सैटिस्फैक्शन. So Fitband can identify opportunities to differentiate itself and have a unique proposition. So that is your thing. That my pricing will be lower. My features will be essentially I will offer step tracker. My customers value step trackers more than ESGs and stress levels. My customers are not that aware, and I don't want them to confuse themselves with the product that this is a high-end product which will provide ESGs and everything. Then comes to your establishing the point of difference and point of parity. These are the two definitions that you all should know. First is point of difference. What is the unique feature apart from others? Am I able to do the sleep analysis? No, I'm not able to do the sleep analysis. My focus will remain my step counter. Or is it the battery life that you need not have to ever charge? Like you charge it once and keep it for 28 days. And compatibility. So what is happening is that one of the brand that we all know offers a compatibility or a ecosystem feature. So use these words as
creatively as possible, because that is your point of difference. But at the same time, there will be some point of parity. Point of parity is basic battery life, basic features, basic design. I won't be making a watch which is having a screen equivalent to a size of a phone. Point of parity is that following the curve, going in the same direction, that helps the customer to identify that these folks are selling watches. So this is my point of difference and point of parity. Then comes the another step is plotting the perceptual map. This, I'm sure that if you'll use this word in front of your interviewer, he will definitely get impressed 1% more in your interview. So creating a perceptual map helps you to visualize the position relative to your competitors. So what happens is that there will be definitely 2, 3, 4 parameters basis which will try to position your brand. So how you position your brand in, so it will be a BCG matrix. Have you guys have seen BCG matrix? Anyone? Okay, so it's a 4 axis graph. So perceptual mapping, you will consider your 4 features by prices, features, overall value, and you will try to plot it. So basis that, how you stand, uh, and where is your brand. So that will help you to give a comparison to your investors or company CFOs and CEOs before the launch. So this is very important. This is your next step. Then comes, you have decided your STP. Now comes establishing the positioning. You will go and implement your promotional strategy based on the customer's buying and adoption. So yeah, you will stop your planning process. You have finalized everything. Now comes the real game, that you are getting into the market. So now will start generating awareness. So you'll start generating awareness about your Fit Life brand. That I'm running digital marketing ads. Digital marketing ads is very important. I have also uploaded a session on that. Performance marketing is one of the best thing that could happen to any one of you at this age. Like if you become the influencer marketing or performance marketers, and knowing these things will help you and help you to lead a team which will do these things for a brand. Then your social marketing campaigns, influencers, partnership, and targeted content. So why, as a fitness brand, I chose as a marketing channel, because if someone wanted to have a step counter like on his hand, then he definitely have a smartphone. That is my assumption. If you have a smartphone, there is no smartphone in this country right now which doesn't have a Facebook or a WhatsApp. Do you guys agree with this assumption that all the Android phones have at least one social media application? And I'm assuming WhatsApp is also one of the social platform. Say yes or no. Okay. So I assume that I'll do a lot of influencer marketing. Like you guys have seen. So there are a lot of fitness influencers who does this. Like, so what is the rate is that, okay, so you might also have to run these models in future. So usually what happens is there are two kinds of revenue split between an influencer. So one is basis your how many followers you have on your Instagram, basis the 20 to 25%, and sometimes 30%, you get a amount from the organization direct. But sometimes revenue share is there. Sometimes do influencers. I do follow one of the influencer, which is I guess Sanket from Muscle. So he always drops his code. So what happens is whenever you uses his code, he will also get a share of the revenue. So by this is nothing but your influencer partnership. So by showing the benefits of the fitness, including accurate tracking, personalized insight, and convenience, with the help of your social media marketing team, you will able to generate interest, curiosity amongst the target audience. यार अब मैंने संकेत का नाम लिया, मैंने मसल ब्लेज बोला दूसरा, तो why is it like? Because he did his job. He's able to help me to recall a brand.
half job is done. Then communicate the POD. So tell me, what is POD? I have explained a few slides back. Tell me, anyone? यार ऐसे मत करो यार. So POD is point of difference. You will only, so point of parity is the foundation, but if you want to sell your product, point of difference is very essential. If you need both point of parity and point of difference, and it is assumed that point of parity though it's a no brainer, but point of difference is something where where the real incremental benefit starts. So through engaging in advertisements, promotion, demonstration, and user testimonial, Fitband will continue to highlight its advantage over competitors. Long-lasting battery, for example, 28 days, I'll have a battery, advanced sleep, and compatibility with the popular fitness model. So that is my communication of POT. Then comes the monitoring of the competition. That ongoing monitoring of the competition, like other fitness brand, allow my brand to stay informed about their strategies, pricing, and product updates. For example, Apple is giving updates every month, and updates is making their device more accurate. Or tomorrow, Apple has slashed down their price by 25% and 35,000 they are charging, and my product is of 30,000. So I won't able to sell my product. So I have to cohesively think about these strategies, pricing, and product update. This will keep me helping me having an informed decision and respond effectively to the market dynamics. So this is my monitoring of the competition. This is how the project timeline looks like. You need not have to specifically say this, but if you are giving an offline interview, that is really important. Market research is your customer research. Then you do a target audience definition, which is your part of STP. Then setting up your marketing objective, POD, POP. Then developing a market strategy, that how do you try to do the social media marketing, influencer marketing, or is it offline digital marketing? Then comes your implementation of these tactics. How do you do it? Then after implementing it, how do you monitor it and do the reporting and analysis? So how these two steps are different. First, you will collect the data, monitor your own data, reporting and analysis, and analyzing why you went wrong and what your competitors are doing. So this is your project timeline. Again, the 5 step is detail the marketing mix. So what is your marketing mix about product? First is your product, then your price, then promotion, and then your place. So first is your product. So explain your product to your in your framework, which is my product is sleek, my project a product is lightweight, my product have a different color, heart rate, it is providing me heart rate. So this, okay, so this is one of the case study. Tomorrow someone will come and ask you to sell a detergent brand. So everything gets changed, but the framework remains the same. I hope you are able to get this. And honestly, I'll finish this PPT in next 10 minutes, and I want everyone on camera to discuss it again. So FitLife is a sleek, live, a lightweight fitness tracker with a color display. Then like whatever your features are, whether you want to put a sleep tracker, or whether you want to put a step tracker, whether you want to put a battery, or whether you want to put a compatibility. It's on you. You will define your product design features with your target audience expectation, which is high quality and functional fitness tracker at a lower price. Then comes into your price. Am I adopting a competitive pricing? Am I adopting a penetrative pricing? So these are the decisions that you need to take. Will I uh, provide a discount model to my customers that 10,000 is the MRP and 30% off, 40% off, that a few of the Indian competitors does. Then whether I'm charging a higher price or a lower price depends on the strategy. Then
what else? If I'm charging more than Apple, then I have to position it to a very HNIs, like high net individuals. But I know that I'm specifically targeting tier 3 and tier 2. I have to keep it like 2,000, 3,000. Like I have not seen a lot of people having an expensive smartwatch, which is more than the price of their phone. So these are the things that you might also assume. Then comes into your place. How do you sell it? Is it your aggregators who will sell the product? Is it you will create your own distribution channel like D2C? So what is the difference between a D2C brand and a brand which is selling on Amazons of the world? Okay. So D2C is direct to customers. They definitely do have their own distribution channel, but later on they also come to Amazons and Flipkarts. So that is the case. D2C brand is nothing but having a very good brand. So you have to decide whether you have to only sell it through offline channels or online channels, which is including website, e-commerce, or partnership with online retailers. That is the call that you need to make. So this your basic agenda should be to cover as much as your target audience. For example, if my target audience, just assuming hypothetically, is not someone who buys product online, but I am selling product only online, this is a mismatch between the ask and the expectation. Then comes your brand establish itself, like for example collaborating. For example, healthcart is one of the most used fitness e-com. You name the product which is in and around your fitness, they have it. So doing those collaborations, then going to gyms, going to sports stores, etc. That is your place. Then comes into your promotion. Promotion I have already discussed in detail, and in brief. Now I'll be discussing it in detail. So what is my promotion? What am I utilizing? Is it a normal strategy that I'll put it in the print every day? No, I'll use the integrated marketing communication, which is digital marketing and social media marketing. Digital marketing will be relevant to knowing that who is searching about my product or fitness, displaying ads on applications. Have anyone used Splitwise ever? Any Splitwise users here? Okay, so Vishaka, you might have seen those applications when you put expenses more than 5 times, you'll get an ad for 30 seconds. So those are nothing but your display ads. Then your SEOs. If you start searching, so one of the live example, ki- just tomorrow morning, not tomorrow, maybe Monday, 12 o'clock policy. Just search about your term insurance and put details on Policy Bazaar. In first 30 minutes, you'll get a call from them. How do they get that data? Their digital advertisement. Then retargeting campaigns to help the potential customers. So these are your digital marketing. Then comes your media marketing. Social media marketing is nothing but collaborating with a lot of influencers on Instagram, Facebook, WhatsApp, Thread, then Twitter, LinkedIn. That is your social media marketing. So you have to understand that this is not a one fit solution for all. I'm launching my fitness trackers. That's why I'm using this. Now comes your content marketing. Content marketing is nothing but how content marketing and SEOs are same, honestly. So content marketing is how you are putting your blogs, videos, or interactive content on your social media. But these blogs are also in your website. So website, when you put specific words in your website, SEO do help you to search those things. So content marketing, and essentially content marketing is one more thing. For for example, you start putting a lot of content about how to get fit, and people start following you, and you then become established as a trusted resource of finance enthusiast. Ki, like, I want to lose 10 kgs, and a fitness tracker brand Fit Life is writing about the content, how to lose X weight, how to lose Y weight, and how to do these things, how to make a carrot juice, etc. Then comes a public relation, that
Public relationship is common to all and anything and everything that you will do ever. Public relation includes talking to customers, talking to your stakeholders, talking to brand managers, everything. Releasing your financial numbers if your company is public. So that is your public relation. Then putting articles on newspaper that you are launching something. So not all articles are paid, honestly. So that is one. Then getting your product reviews from your customers. Then in in every case, increasing the brand visibility and credibility. So this is the idea that how you can launch a fitness tracker. It included understanding the customers, then applying STP, then discussing about your point of difference, point of parity, then doing the perceptual map, then establishing your positioning, then creating awareness about it, communicating your POD, monitoring competitive competitors, what is happening. You can put this project timeline in front of, like, at the start of your discussion, like ki, hey Tushara, I want to approach this problem statement with 5 steps, namely market research, target audience definition, setting up marketing objectives, etc. Then after a competitors analysis, you will do your detailed marketing mix. That how will you do the marketing mix, which includes your price, place, promotion. Okay, I guess I missed something. Product, price, promotion, and place. You can also use 7 Ps. So this is my idea of how you can solve a case of launching a fitness tracker. But I know that you won't get a problem statement to sell a fitness tracker. Mostly you will have a something which is very relevant to an FMCG. But then you have this question that why, Tushar, you did this? Because no one in your B school will solve a fitness tracker problem. Everyone will ask you to solve a soap or a FMCG product. So you won't be aware about it. So that is about the case application and marketing. Uh, Over to everyone in this class. I'll stop sharing my screen and I'll again start uh, like taking questions. And I want everyone to be online and listening to me and asking questions. Guys, if you have anything, please, Vinay, Bhavesh, Ananya, Adyam, Vishakha, everyone is like, waiting for you. And since Tushara has given a very, very insightful session, please go ahead and ask questions. There's nothing to be shy of. No question is right or wrong. Please go ahead. Not really a question per se, but I just want to know, like, is this an approach that we follow for every product and sector and industry? Or, I mean, you did clarify it once that for FMCG products, we'll probably have something else. But what's the core difference? So essentially, your framework remains the same. That will start with your customer, knowing your customer. Then you will essentially go and define your product. But you talking specifically about, have you ever seen detergent powders coming with an influencer marketing on Instagram? Very tough. Not really. Yeah. So these are the nuances that you need to consider in your, I would say, your product and also your brand story. For example, you now you might have seen that people are buying from Instamart or Amazons of the world HUL products, but essentially HUL were OTC products. They were like having a very good and a rich distribution. They still do have it. So you won't go and put anything on social media because you will spend your marketing budget more where your customer is present. My mom is not on
Twitter. I won't do detergent ads on Twitter. My mom is not on LinkedIn, for example. I won't do it. But definitely, you will see a lot of LinkedIn ads on financial products, your watches, and everything. So based on the product, you have to have a different marketing strategy, and there are hundreds of categories. You will never see like uh, Borosil ads. You might see it on Instagram because most of us have started using those coffee mugs. So you need to position your product basis the right target audience. That is very important. Otherwise, you are just bleeding your own top line uh, with a not so relevant marketing strategy. So I wanted to ask, how did you decide कि आपको 4P use करना है यहाँ पे या ये framework मतलब आपको use करना है? Like there can be any framework. मैं यहाँ पे 3C use कर सकती थी या कुछ भी use कर सकती थी. तो how did you decide this? नहीं, वो फ्रेमवर्क डिसाइड करने का कुछ वो नहीं होता कि मतलब मेरे को यही फ्रेमवर्क यूज करना है. Usually we'll try to solve so why do we use a framework? Tell me, Vishakha. थोड़ा structured way में answer करने के लिए, like ऐसी बस solution throw off नहीं करने के लिए. एक तो वो हो गया स्ट्रक्चर डेफिनेटली. एक दूसरा क्या होता है कि पूरे पाई को कवर करना होता है. डिफरेंट फैसेट पेस्टल यूज करते हैं कई बार हम लोग अपने कंसल्टिंग केसेस में, या 4Ps और 7Ps हम लोग अपने मार्केटिंग में यूज करते हैं. बेस्ट कि अगर आपको लग रहा है कि आपका जो डायरेक्शन है वो इस फ्रेमवर्क से पूरा कवर हो रहा है और स्ट्रक्चर हो रहा है, वो होता है. अब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसल्टिंग केसेस ले रहा हूँ, कंसल्टिंग केसेस में इफ यू ट्राई टू रिजिडली फॉलो अ फ्रेमवर्क, you won't be hired that day. So it's very good to use it. It's very good to have a structure, but missing out points due to a framework is not helpful. It will definitely will have a very weird impact on your candidature. So basically, how my solutions are coming to mind, I'll find a framework which is like easy, like मतलब सारा कुछ cover हो जाना चाहिए. हाँ, easy होना चाहिए, but majorly 4Ps और 7Ps cover कर देता है ज्यादातर चीजों को. क्योंकि मार्केटिंग है ही क्या? What is marketing? Like marketing starts with knowing your customer. After knowing your customer, making a product, then knowing your customers that you have created a product. What do you tell to your customer? Point of difference, point of parity. How do you tell that customer? Your marketing strategies. How do you post and analyze that your product is going good or not? Then you do a competitive analysis. Structure बहुत ज़्यादा simple रहता है, process simple रहता है, but on D-Day, how do you process your thoughts and how do you use a framework is totally up to you. मैं इसको अलग framework से भी कर सकता था. So that is the case. Okay, got it. Vinay, Amit, Ananya, Naveen. Hi, sir. Can you hear me, sir? I can hear you. Tell me, please. My doubt was this, sir, regarding pricing. आपने 2 or more than 3 types of pricing बता दिया था ना, like penetrative pricing. उनको कुछ parameters होते क्या हमें decide करने के लिए? Like based on these parameters, we can think of penetrative pricing or we can go with other pricing. So overall company strategy check करा जाता है. So I have also uploaded one of the session on pricing. Do refer that. But to answer this question on this session, penetrative pricing वही लोग use कर सकते हैं जिसके पास deep pockets है. मतलब I won't be a new organization with zero money and I'll start doing penetrative pricing. Why Geo was able to do the penetrative pricing? Because Geo already had a deep pocket. But an organization who is new and not very well funded, then I'll try to be as competitive as possible. Then there are a lot of organizations that is charging premium. Why do they able to charge that premium? Because they have created their brand. There is this brand called Anvation, then Apple, then you have Tateras. So these are few of the brands that have already created and invested heavily on their brand and created a brand. Suppose creating
a brand in the market, you can definitely do a premium pricing. But there is no one fit solution. Matlab, if you have been asked to sell a detergent and you just got to know that you have a deep pocket, then you can definitely start with the penetrative pricing. But assuming that you will always able to use penetrative pricing if your business have a deep pocket, then you are at a wrong place. I'm not really sorry. Your assumptions should be in line with your strategy and your brand story, more importantly. Okay, sir. Thank you. Naveen, Ananya, if you want anything to ask. I mean, I'm really sorry. I didn't able to recognize you. Like, are you one of the mentors here? Yes, Tushar. I am. Really sorry. That's okay. That's okay. I think Ananya and thank you, Nikhil, Bhavesh and Vishakha. I think if Ananya and Naveen want to ask something, or if any one of Nikhil, Bhavesh or Vishakha, they want to add something, because it has been a very, very helpful session, and your questions were, I think, answered well by Tushar. So please go ahead if you have anything. Otherwise, you can reach out to Tushar directly. Yeah. So everyone can reach out to me on my WhatsApp number or LinkedIn or any of the medium. But just a caveat to the session. यार कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता मार्केटिंग में. सो कीप रीडिंग ईटी इक्विटी, कीप नोइंग ब्रांड. अब एचयूएल के पास जाके तुम पीएनजी का कोई प्रोडक्ट बेचाओगे, वो नहीं लेंगे तुम्हें. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं लेंगे तुम्हें. तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एचयूएल की कौन कौन से ब्रांड है, कौन कौन सी कैटेगरी है, रेकेट बेनकाइजर क्या क्या बेच रहा है. और दूसरा क्या है कि कौन से रीजन किसके लिए स्ट्रांग है. एफएमसीजी के लिए सबसे बड़ा मार्केट टीयर 2 टीयर 3 होता है. अब तुम जाके कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट करोगे जो सिर्फ टीयर 1 को सर्व हो रहा है, दे वोंट बाय योर स्टोरी and I won't help you to learn any of the brand story. None of us can, because this is something that is thousands of pages that you need to read every day. Newspaper mein you have to read about different brands, what is happening. Why do I know about Whoop? I'm not a fitness person anymore. I don't have a fitness watch. I still watch a normal analog watch. But I read a newspaper that Whoop is coming to India. And what is Whoop? Whoop is a fitness band which have a subscription model. अब मुझे, मैं या अमित आपको नहीं बताएंगे कभी भी कि यार वूप का फिटनेस मॉडल है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मॉडल है, अमेजोन का कोई और मॉडल है, स्टारबक्स का कोई और मॉडल है. ऐसे एक एक ब्रांड के बारे में हम में से कोई भी नहीं बताएगा आपको, और कभी भी नहीं बताएगा इन फ्यूचर. सो start reading your newspaper, start reading ET Equity if you really want to make a career in marketing. And why I'm still taking sessions on marketing, I love marketing. And definitely, you will definitely see me something doing very relevant to marketing one day. So marketing is creativity, reading and awareness. जब तक तुम खुद अवेयर नहीं होगे किसी चीज के बारे में, you won't able to go and aware about your own product to your customers. ठीक है, these are just few to do things because I didn't get a chance to have a live session with any of you. I had expected a lot of folks on this call on video and discussing things, but genuinely my next session would be very soon, next week, and I want everyone on video. I don't give a damn about anything. Why? Because this is the first basic thing that you all will do in a B school, कि सबसे पहले वीडियो ऑन होगा तुम्हारा. मतलब पीकॉम मीट्स होंगी वहां पे, तुम्हारी प्लेसमेंट मीट्स होंगी, एंड तुम बी स्कूल जा क्यों रहे हो? मतलब यू आर गोइंग टू learn and you are going to network. मतलब when I saw talking to भावेश फॉर एग्जांपल, भावेश ने मेरे से 2-3 चीजें पूछी. अब मेरे को पता है कि भावेश कल मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करेगा तो मेरे को याद है, अरे अच्छा ये मुंबई गया था ना एचयूएल के काम के लिए. मतलब वन ऑफ द गर्ल हु इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम रीच्ड आउट टू मी फ्यू डेज बैक, और मैंने उसका इंटरव्यू लिया था. एंड आई नो दैट शी इज अ बाइकर, सो आई वाज एबल टू रिप्लाई टू हर एंड आई कैन रिलेट टू हर. मतलब ये कुछ टू डू लिस्ट हैं जो कोई नहीं सिखाएगा.
क्योंकि किसी को सिखाना नहीं है ये, मतलब सिखाना चाहिए ही नहीं। बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो मैंने गलती करी थी, मेरे को भी लगता था यार मैं फाइनेंस का हूँ, एक्सेल चलाता हूँ अच्छा खासा, CFA कर रहा हूँ। फर्स्ट आफ्टर 15 days आई एम लाइक आई हैव टू ओपन अप, आई हैव टू टॉक, आई हैव टू पुट फॉरवर्ड माई ओपिनियन। तो यही सब चीजें हैं एज अ बी स्कूल, लाइक अमित might be more senior and I will also want to know his thoughts on these things, and definitely he will enlighten more than me. So over to you, Amit, and if please do make any corrections if required, and you are also on mute, please unmute. Perfect. Thanks, Tushar. No corrections as such, but then, like, you should understand what Tushar has said over the past almost, like, 50 to 55 minutes. And as Bhavesh, Vishakha, and Nikhil, they were asking questions कि सर कौन सा मॉडल लगाना चाहिए किस टास्क में, तो तुषार वाज एब्सोल्युटली राइट कि कोई भी मॉडल लगा सकते हो, लाइक राइट विशाखा, you can put the 4 P's of marketing, you can put BCG, you can put pestle, anything, but then you will have to find something that is more relevant to that particular case. अब जैसे फिटनेस वाला एग्जांपल तुषार ने लिया, राइट निखिल, I hope you are able to understand Hindi, right? Yes, okay, ठीक है, we will switch between that. So it's like कि the exact model should be relatable. आप कोई भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा लो, पेस्टल लगा लो, BCG लगा लो, 4Ps लगा लो, कोई भी मॉडल लगा लो, but then the example which is the most closest to that case study, there you put it and there it's done. And as the second follow-up thing which I wanted to say, like Tushar was very stringent on the fact that you should put your video cam on. Abhi Tushar and I have done MBA long back, right? उस समय कोविड, उस समय व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा तो था ही नहीं. आई थिंक तुषार यू विल एग्री, इंस्टा पे फॉलोअर्स वाला तो कुछ सीन ही नहीं था. क्या अभी भी नहीं चलता, सच बताऊं तो यार. ऑनेस्टली क्या हो रहा है कि अब ना चीजें शिफ्ट होती जा रही हैं. मतलब मेरे को जो लगता है कि पहले होता था कि सिर्फ मार्क्स चल रहे होते थे, अब जो बच्चा अच्छे से बात कर पा रहा है, मतलब पार्टनर्स कॉल होती है. सो कंसल्टिंग का एक बताता हूँ. सो टेबल में 12 लोग बैठे होते हैं, एक पार्टनर और AP बैठा होता है. पार्टनर इज दी लाइक 8 years 9 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर योर MBA. AP अभी बनने वाला होता है पार्टनर. उस 12 लोगों के साथ वो बैठे होते हैं. 12 शॉर्ट, ये बेसिकली 6 टेबल होंगे आपके, और 70 शॉर्टलिस्ट वाले बच्चे बैठे होंगे, और डिनर कॉन्वर्जेशन है ये. राइट, एवरीवन इज हैविंग डिनर. जो अपने पनीर दाल मखनी में फोकस कर रहा है उसकी वहीं बैठा रह जाएगा. वो जिसने उस टेबल में स्मार्टली जाके 3 पार्टनर से बात कर ली, अगली सुबह उसको फोन आ जाएगा कि भाई आप अच्छे लगे हो, हमारा हमारा लिख देना नाम आगे और हम ले जाएंगे. unless you talk, why I'm taking sessions, मतलब मुझे, you all are different minds with the different ideas and different doubts. I will learn from each of you and I'll read back and I'll learn. मेरा काम हो गया वहां पे. अब तुमने मेरे से क्या क्वेश्चंस पूछे, कितना इंटरेक्ट करा, वो तुम्हारा काम है. अब जैसे तो विशाखा ने मेरे से एक फ्रेमवर्क पूछा, मेरे को नहीं आता हो, मैं कल जाके पढ़ूंगा उसको. तो ये सेशन का ऐसा है कि मतलब इफ 7 people are there, you take 7 input, go back, read, और try to be on video cam, because यार शक्ल नहीं भूलता कोई, नाम बहुत लोग भूल जाते हैं. मतलब अमित, आई एम अवेयर दैट यू आर मोर एक्सपीरियंस देन मी. शक्ल नहीं भूलता कोई, नाम फिर भी भूल जाते हैं. उसका भी रीजन है. उसका रीजन पता है क्या है? Because the nerve which connects your eye to the brain, that has a shorter distance. Oh. और ईयर से जो ब्रेन का जो डिस्टेंस है वो लंबा है. So that is absolutely right. Sorry to interrupt you, but काफी ज्यादा, like, it's what Tushar is trying to say कि guys please network. एक जगह अड़के मत रह जाना. I was in a batch of 250. I am a pass out of symbiosis. I was in a batch of 250. आज की डेट में भी ना किसी से जाके पूछोगे कि अमित गुप्ता कौन है, या वो लोग मुझे गुप्ता जी कहते थे, किसी को बोलोगे ना कि गुप्ता जी कौन है, they will say कि हाँ अमित गुप्ता है. So it was, and irrespective of
like whether you know a language or not, try to learn languages. Vinay, where are you from? I'm from Andhra. Sir. Andhra. So if I ask you hello, no, mama, so then you will know, na. Then you will have a smile on your face. Everyone in Andhra is called mama. Mama means friend, right? And then whenever you ask them to say something, you say chepu, right? Right. So that is the way you should network. You should, as Tushar rightly said, guys, please network, network and network. एक जगह अगर पनीर दाल चावल खाने बैठ जाओगे ना, तो तुम्हें ये नहीं पता लगेगा कि कॉन्टिनेंटल क्या है और मुगलई क्या है. और हाँ एक और तुषार. अमित, एक और इशू आजकल क्या आ गया है मेरे हिसाब से, कि आजकल एवेन्यूज इतने बढ़ गए हैं कि तुम्हारे 25 लाख रुपए देने के बाद भी तुम सही से नेटवर्क ना कर पाओ और कोई फ्री में लिंक्डइन पे अपना गेम खेल जाए. एग्जैक्टली. तो यार अपने 25 लाख अच्छे से मतलब यूटिलाइज करो. मतलब यूटिलाइज करो, मैक्सिमाइज करो. अब मतलब अब वो दिन नहीं रहे कि यार मैंने 25 लाख रुपए दे दिए तो मेरा नेटवर्क सबसे अच्छा होगा. नहीं, मतलब आई हैव सीन सो मेनी पीपल ऑन अमित ऑन लिंक्डइन डूइंग सो ग्रेट. दे हैव नॉट डन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द लाइफ, सॉरी टू से. जो हमारे इंडियन पैरामीटर्स के हिसाब से उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं करा, बट वो हमसे बहुत ज्यादा कमा रहे हैं क्योंकि उन्होंने राइट टाइम पे नेटवर्क करा. राइट टाइम दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट देयर ओपिनियंस. एंड डेटा पे यार, डेटा सबको पता है, डेटा इज पीओपी एंड ओपिनियन इज पीओडी मार्केटिंग टर्म्स में. पीओ योर डेटा should be there for everyone, but POD is your opinion. Voice out your opinion. मैं ये नहीं कह रहा कि जाके पॉलिटिक्स पे डिस्कशन करो और कुछ रैडिकली बोलते चले जाओ. अगर तुम बोलोगे कि हाँ मुझे तुषार जानी एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं पसंद, मुझे अमित गुप्ता एज अ प्राइम मिनिस्टर पसंद है और ये 4 रीजंस हैं, तो तुम्हारी विक्ट्री है, चाहे तुम जो भी हो. लेकिन अगर तुम बोलोगे नहीं मेरे को तो यार शुभम सर ही पसंद है लेकिन कोई रीजन नहीं है उसका मेरे पास, या मेरे को अमित सर ही पसंद है मेरे को कोई रीजन नहीं है, तुषार सर ही पसंद है, उसको कोई नहीं बुलाएगा, कहीं भी नहीं बुलाएगा. लेकिन मैं बोलूंगा कि 4 चीजें ये रीजन है और मेरे को स्ट्रांगली लगता है ये मेरा पीओडी होना चाहिए. एंड नेटवर्क करो यार, नेटवर्क. जस्ट नेटवर्क. सब लोग, everyone will make PPTs, everyone will score marks, everyone will be part of college committees, everyone will do that. But try to understand why we are having these sessions with Tushar and otherwise, is because we want you guys to be prepared already, कि तुम बी स्कूल में जाओ और तुम्हें पता है कि यार यही करना है. And the bottom line is, at the end of 1 year भी क्या कितना होता है तुषार, 6 महीने के बाद तो प्लेसमेंट हो ही जाती है. अभी पता लगा, जाएंगे ये लोग प्लेस. हाँ, मैं 6 महीने के बाद तुम प्लेस हो जाओगे. सितंबर में लखनऊ का खत्म हो जाता है समर, हाँ, और हाँ, ही है फेट. ऑप्टिमिस्टिक मान लिया, 6 महीने मान लो, और फिर अगले साल तुमने इंटर्नशिप करी, इंटर्नशिप करके आए, 1 महीने बाद तुम्हारे हाथ में पीपीओ, क्या करोगे फिर? 1 साल तुम्हारा पेड वेकेशन है. जितनी ऐश करनी है ना उतनी ऐश कर लेना. So I was sitting with my interns. Bhai, I only said one thing to them. This is the year. Don't think about anything. Maximize everything. मतलब, और इंटर्नशिप में एक और चीज बताता हूँ. In your interns, internship placements, there are more companies than your final placement. So getting a good company in your summer internship is more likely. कई कंपनीज फाइनल्स में आती नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि मैं पहले ट्रेन करूंगी बच्चों को, या मैं पहले काम के बेसिस पे जज करूंगी उनको. वो नहीं करते हायर फाइनल्स में. वो कहेंगे नहीं मेरे को तो समर इंटर्नशिप में चाहिए. मेरे बैच में काफी कंपनीज आई थी जो समर्स में फाइनल्स में आई नहीं. उन्होंने अपने समर्स के 15-15 बच्चे इकट्ठे करे, वो उन्होंने ज्वाइन करा और चला दिया. तुषार, एक बार इसे एक बार इन्हें वो बताना, स्टाइपेंड बताना एक बार समर्स का. यार एवरेज ही बता दे. डोंट टॉक अबाउट द हाईएस्ट में डर जाएंगे. एवरेज बता. मैं हाईएस्ट भी बता देता हूँ सर, और लोएस्ट भी बता देता हूँ. लोएस्ट है तुम्हारा, मैं 2 महीने का बता रहा हूँ, 1 लाख रुपए भी लगेगा, और कुछ बच्चे तुम्हारे कैंपस में 8 लाख रुपए भी कमाएंगे. और मैं सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और मैं किसी कैंपस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बता रहा हूँ. एवरेज 4 लाख सभी बना लेंगे, लेकिन अगर तुमने नहीं करा तो फिर वो 1 लाख भी बना सकते हो तुम. मतलब worst case scenario according to Tushar is 1 lakh. 1 lakh means 50,000 per month. That is your stipend. And best case scenario is 4 lakh per month. हाँ, exactly, Bhavesh, yes. So है, मतलब see, yeah, get a reality check. भाई बहुत everything is getting very very expensive.
right? Every majority of the people are sitting in metropolitan cities, and once you graduate from your colleges, तुम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे के बाहर नहीं बैठे होगे if you are earning well. हाँ तुषार, I think you'll agree. यार मैं हैदराबाद में बैठा और अभी बैंगलोर का फ्लैट ढूंढ रहा हूँ। सोचो मैं right? मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई एम ऑन अ रिकॉर्डेड सिस्टम, आई एम नॉट सेइंग, बट इट्स टफ, इट्स रियली टफ। और मैं बैंगलोर से नहीं हूँ, और मैं दिल्ली का हूँ, और मैं हैदराबाद में फ्लैट ढूंढा है लास्ट ईयर, अब मैं बैंगलोर ढूंढ रहा हूँ। तो मुझे समझ में आया है कि एवरी प्लेस इज एक्सपेंसिव, एंड और मतलब वो इसलिए क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे लोग हो गए ना जो पैसे दे देंगे। डिमांड एंड सप्लाई, लाइफ में एवरीथिंग इज डिमांड एंड सप्लाई। मतलब इफ यू हैव मोर फ्लैट्स देन यू विल हैव लेस रेंट, बट ऐसा नहीं है ना। मतलब हर everyone wants to pay more. Why you everyone have paid for this course to get an edge? और तुम्हारे जैसे काफी लोग हैं ना यहाँ पे, 50-60 लोगों ने दे दिए पैसे, और काफी सारे इंस्टीट्यूट होंगे, तो सब प्रिपेयर कर रहे हैं ना। मतलब तो तुम ये मत सोचना कि तुम बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हो। तो So, यही यार, इतना ही था ये तो। yeah, so basically the crux of this is that I think once you get into an MBA college, सबसे पहले जो तुषार ने भी बोली और हम लोगों ने पहले भी सेशन में बोली है कि कोशिश करो यार प्लेसकॉम में घुस जाओ। आई नो इट्स टफ टू मैं एंटर द मेरा प्लेसकॉम। कॉन्ट्ररी ओपिनियन है इस पे। मैं अच्छा ओके, ठीक है ओके। सो आई विल पुट इट दिस वे, गेट इनटू सम कमिटी, एक कमिटी में एंटर करो एंड कोशिश करो कि यू गेट अ वेरी वेरी नाइस कंपनी एंड ट्राई टू टारगेट अ कंपनी व्हिच हैज अ पीपीओ पॉलिसी। यार मैं इसको फ्रेमवर्क में बताता हूँ। मैं तुम्हारे गो अहेड। तरीके की कमेटी होती है, हाँ एक नौकरी वाली, एक मस्ती वाली। और मैंने इसको डिसाइड कर लिया था, एक नौकरी वाली और एक मस्ती वाली। तो मैंने, मेरी प्रोफाइल ठीक थी, तो मैंने कहा था कि नौकरी मैं खुद लूंगा, मस्ती में कमेटी में जाके करूंगा। लेकिन अब तुम्हारी प्रोफाइल खराब है, तो तुम नौकरी वाली कमेटी लेना, क्योंकि मेरे को लगा था कि मेरी नौकरी पक्की है, मेरे को मस्ती पक्की करनी है। तो so my sister was the P-commer from in my college, like 3-4 batch ahead, like before me. So she was like कि तुषार P-com में जाना है, and ठीक है फिर I didn't apply to P-com, and every time whenever I meet her she is like कि why didn't you apply to P-com? मैंने कहा कि sorry Gitika, I really wanted to enjoy and I enjoyed. I know P-com will also enjoy, but yeah, so I was just having this conversation with one of our alum Calcutta 2020 batch, Ashish, in this evening. B-School is the best place to learn prioritization. मतलब 10 चीजें तुम्हारे ऊपर आएंगी और you have to prioritize 3 चीजें। मतलब it's a best place to learn, it's a best place to network, it's a best place to sleep, it's a best place to commit to a relationship, it's a best place to get a best placements, it's a best place to read, it's a best place to interact with professors, it's a best place to travel also, stacks पे जाओ। ये 8 चीजें तो मैंने अभी तुम्हें बता दी, जबकि मेरा मैं आई एम स्टार्टेड माय डे 8 in the morning, तो अभी भी मेरे दिमाग में 8 चीजें आ रही हैं। 10 चीजों में से 5 चीजें अपनी प्रायोरिटी पे रखो और 3 चीजें नॉन नेगोशिएबल रखो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो चीजें तुमने नॉन नेगोशिएबल रखी होगी ना आज, वो तुम 101% अचीव कर लोगे। So, two questions. Because you all talked about Placecom and other committees. My first question would be: isn't that a very big trade-off you make? Because I've heard that people are Yeah. not able to go to. This is something that I told you right now ना, this is the prioritization that you need to make। 8 चीजें मैंने बताई है, तुम 3 चीजें अपनी खुद से चूज करोगे ना, तो ट्रेड ऑफ है ही नहीं ना कुछ। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इक्वल्स टू है बी स्कूल में सब चीजों का। मतलब अगर पीकॉम जा रहे हो तो ये नहीं है कि तुम नेगेटिव में हो, मतलब पीकॉम एंजॉय। मैं तुम्हें सो एक्सेल, व्हाई आई लाइक एक्सेल, बिकॉज आई हैव वेंट टू एक्सेल इन लास्ट 5 months ट्वाइस। यार ट्रेड ऑफ इक्वल टू है हर चीज का। अगर पीकॉम जा रहे हो, पीकॉम के काफी सारी चीजें जो मैं रिकॉर्डेड लाइन में नहीं बोल सकता अभी, लेकिन वो अच्छी है उनके लिए। वो मेहनत करते हैं 3 महीने, और 3 महीने अच्छे से मस्ती भी करते हैं। कुछ चीजें उनको मिलती है अच्छी, कुछ चीजें क्योंकि उन्होंने सैक्रिफाइस करी है तो उनको कंपनसेट करता है इंस्टीट्यूट। फॉर एग्जाम्पल एक्सेल राय में पीकॉम और प्लेसमेंट प्रिपरेशन कमेटी को बजट मिलता है पर डे का, खाने या स्टेशनरी का। मेरे को नहीं पता तुम लोगों को पता है या नहीं पता, अमित, इंस्टीट्यूट यू स्टिल गिविंग
X amount of rupees per day, you can utilize it for juice, food और ट्रैवल टैक्सी। ट्रैवल हो गया, जो करना है करो उस पैसों से। वो एक रजिस्टर होता है उस कैंपस में। और मैंने ली थी यार उससे एक स्टेशनरी भाई, जो दोस्त मेरी थी अभी प्लेसमेंट प्रिपरेशन में, कह रही मैंने ले लिया, मैं ले लूंगी एक और, यू पे इफ यू वांट टू पे मी, और जो भी इक्वेशन। तो यार किसको मिल रहा है? कभी कभी तो लिमिट भी नहीं होती तुषार। वही तो मतलब है। कभी कभी इफ बजट इज एलोकेटेड से फॉर ये कैसे 20,000 पर डे, बताऊं? उसके ऊपर जा रहा है तो यू कैन टेक अप्रूवल एंड डू इट। 50 लोगों का मल्टीप्लाई होता है, रोज थोड़ी कोई स्टेशनरी की दुकान पे जाके खड़ा हो, एग्जैक्टली। वो कमिटी लेवल पे है। अब तुम खाने बैठे हो, तुमने दोस्तों को भी खिला दिया है, और यार नेगेटिव कुछ नहीं होता, मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो यार। और भेड़ चाल भी बहुत होता है। Sorry to interrupt, but by trade-off, I meant I've heard people are not allowed to go to student exchange programs and stuff if they sign up for it. सो मैंने बताया ना, प्लेसमेंट या मस्ती। मैंने कहा कि भाई मैं नौकरी अच्छी लूंगा, तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी अच्छी। तो वो चीज है तुम्हें खुद अपना कि भाई दिस इज माई सेल्फ इवेल्युएशन, दिस इज भावेश 2.0 आफ्टर एमबीए। ये 4 चीजें कमी है अभी भावेश में, तो वो भावेश कहाँ से लेगा, वो भावेश को डिसाइड करना है उस 2 साल में। और बहुत लोग होते हैं यार, माई ओन लाइक ब्रदर वेंट टू IIT दिल्ली एंड ही इज लाइक आई नो दैट आई वोंट गेट अ गुड जॉब, क्योंकि मैं इससे जेवियर्स कोलकाता से हूँ और मैंने कुछ CFA और CA नहीं कर रखा, मेरे को नौकरी चाहिए। वो गया भाई अपना प्लेस कॉम, EYP AVP बना हुआ बैठा है अभी, और वो कहता है बेस्ट है। आई वेंट टू हिज वेडिंग, एवरी पी कॉमर वॉज देयर ऑफ हिज बैच। मतलब when you work, live and die with the same people, they all were there. Dubai, the people were flying from Dubai and Saudi to attend his wedding. So that is the bond. तो ऐसा कोई सैक्रिफाइस नहीं होता, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं होता। मैं तो आज भी वैसे रिग्रेट नहीं करता, बट काफी कॉन्ट्रेरी ओपिनियन है बीकॉम ज्वाइन करना मेरा आज भी। सर एक पॉइंट पूछना था, आपने बोला कि कंपनीज थोड़ी कम आती है ड्यूरिंग द फाइनल प्लेसमेंट्स, बट अभी मैंने देखा है कि सिर्फ बेन वगैरह बहुत आ रही है, इंटर्न्स के लिए लेके जा रही है, बट पीपीओस नहीं दे रही है सर, काफी सारी कंपनीज कर रही है। सो पहली बात तो फाइनल्स बहुत दूर है हमारे लिए, तो फाइनल्स का तो डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए। और दूसरा क्या है कि समर्स का डिस्कशन होना बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि वही एक चांस है, समझ लो। बेसलाइन मैंने बता दिया तुम लोगों को। बाकी पीपीओ जिसका आता है और नहीं आता ना, जिसका नहीं आता उसके हिसाब से किसी का नहीं आया है, और जिसका आता है उसके हिसाब से सबका आता है। तो मैं अपने बैच में 6 लोग गए थे अमेजोन फाइनेंस में, और एक ही आया था पीपीओ। अब मेरे हिसाब से सबको मिला है पीपीओ, अब उन 5 से पूछोगे तो किसी को नहीं मिला है। तो यार वो डिपेंड करता है किससे बात करो, लेकिन किसी को तो मिलेगा ना। और पीपीओ काम देख के ही मिलता है यार, और जिसने काम करा होता है उसको मिलता ही है। लेकिन यहाँ पीपीओ वाला हडल है ही नहीं ना, यहाँ तो हडल पहले समझ निकालना है। सो दैट्स द आइडिया। Any more questions? Anyone? Any points? सर मेरे तो 2 डाउट्स है। फर्स्ट डाउट इज आपने बोला जो लाइक नॉन मसी वाला क्लब्स है, like I don't know what are their names. If you can list out some, it will be useful. Committees names कह रहे हो क्या आप? हाँ यार वैसे कुछ नहीं होता है, हर कैंपस का अपना होता है। देखो सच बता रहा हूँ मैं, बट पीकॉम और प्लेसमेंट प्रिपरेशन इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरी कोई सिर्फ मस्ती वाली नहीं थी भाई। मतलब मैंने अश्नीर ग्रोहर, करुणेश तलवार वगैरह सबको बुलाया था और अच्छे इवेंट्स कराए थे। वो तो बस था कि मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप फॉलो करना था, तो मेरे लिए मस्ती वो थी। मतलब आई वांट टू बी स्लो, I want to stay connected with the entrepreneurs of the country. I invited at least 20 folks, certainly the 30 of Asia in the campus. तो मेरे लिए वो मस्ती थी। मतलब that is what is my passion and fun. I'm not saying that I was just like chilling with the name of committee. No, that is not the definition of masti here. My definition is my passion. Like masti equal to passion. My passion was entrepreneurship. Still is. I read about it. I talk about it. And why I'm reading about marketing, because I like reading about D2C brand, and that is the definition of masti. Masti equal to passion. Thank you, sir. One more doubt is that like अब बीकॉम में जाने के लिए कुछ
in this 1 month, what can we do? यार वो तो अमित सर ही बता पाएंगे आपको सही से, मैं तो सिस्टम से बाहर हूँ यार, बीकॉम वाले काफी। Okay, a very difficult but yet an easy question. For going into a PCOM, you do not have to prepare. As soon as you go for the first round, PCOM generally in my college they had 7 rounds. Okay, 7 rounds of. ऐसे अमित ने राउंड्स बता दिए हैं, राउंड्स बताने भी नहीं होता, एनडीए साइन होता है कई कैंपस। अच्छा चलो ओके ठीक है ओके एनीवेज नाउ आई हैव टोल्ड कि x नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं ठीक है सो फर्स्ट राउंड में ही विद इन द फर्स्ट 30 seconds the way you enter the room, the way you have groomed yourself, the way you are talking, the way your conviction power is, and उसी के बाद वहीं पे ही मतलब they will ask you to leave the room within the next 2 minutes, right? So you don't have to prepare. But understand one thing. Yes, Vishaka, it's surprising. Understand one thing, that once you get into a place com, your masti wali life is over. You won't be able to interact with this. I can say, na Tushar. This I can say, na. Haan. You won't be able to interact with your fellow mates in the usual manner. कि और भाई क्या चल रहा है, क्या नया ताजा नहीं. You'll be very stern. You have to be very stern with your seniors and then subsequently your juniors. बहुत ज़्यादा, it's very stiff. Like it's, I don't know how to describe it. It's a job, honestly. It's worse than getting to a C level executive, and it is very different, and it will be very challenging. But yes, it has all the वर्थ इट है भाई, which I cannot obviously disclose. वर्थ इट है, मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो अगर ज्वाइन करो तो वर्थ इट है, जो रिस्पेक्ट मिलती है ना वो वर्थ इट है। मतलब तो वो है कि बस ये कि वो तुम्हें क्या चाहिए वो डिसाइड करना, बी स्कूल इज द राइट प्लेस टू नो। एंड ऑनेस्टली बहुत लोग चाहते हैं बीकॉम में जाना और बहुत कम लोगों का होता है, तो ये मत सोचना कि तुमने सोच लिया तो हो जाएगा। वो तो मैं कैजुअली बात कर रहा हूँ बीकॉम के बारे में। बीकॉम का लास्ट टास्क होता है 2 दिन लगातार जगना होता है या 2.5 दिन लगातार जगने होते हैं, तो वैसा कुछ होता है। बाकी यार वर्थ इट है, हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी वैसा कुछ नहीं है, फिर कुछ और करना, वो नहीं हुआ तो फिर और कुछ करना, तो दैट इज पीसफुल। बट एनी हाउ एवेन्यूज बहुत सारे हैं, प्लेसकॉम नहीं हुआ तो और भी कमिटीज हैं, ट्राई टू गेट इनटू दैट। बट देन हाँ, प्लेसकॉम इज अभी तो बिकॉज सी तुषार, वी नेवर हैड सच सेशंस राइट। हम लोगों ने जब एमबीए किया, हम लोगों के पास ऐसी गाइडेंस थी नहीं। वो बहुत डिफरेंट टाइम था, मेरे को लगता है कि मतलब हाँ, हम लोग के पास व्हाटएवर लाइक यू नो निखिल, भवेश, विशाखा, मीम्स भी नहीं थे मेरे को लगता है कि मतलब जाके पैसे दो इतना या करो, मतलब मेरे पास तो नहीं थे। मतलब सर आई एम रियली सॉरी बट नहीं आई टोटली एग्री विद यू यार। मीम्स नहीं, मोर देन तुषार, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू तुषार, मोर देन द मीम्स, हम लोग के पास ऐसे चैनल्स ही नहीं थे यार। मेजरली वो चैनल एस्टैब्लिश नहीं हुए थे, तभी वो मीम बजट एलोकेशन ही नहीं हुआ था ना घर से, वो बात ही नहीं हुई थी। ट्यूशन जाना एक बड़ी बात थी, मतलब ऐसे मम्मी को बोलूंगा कि भाई सेशन लेना है, तो मतलब ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ नहीं था। अब आज हो रहा है प्रॉपर, इतना कुछ हो रहा है डिस्कशन। और मैं तो ऐसे सोच के चल रहा था कि कम से कम 20 या 25 लोग आएंगे, क्योंकि ऑल द registered people can join the call, बट वही है कि मतलब like we don't value these conversations। मतलब we were very hard pressed at that time. अगर मैं अपने पेरेंट्स से बोलता कि मेरा एमबीए में हो गया है और मुझे ना कुछ प्री एमबीए या पोस्ट एमबीए सेशंस चाहिए या ड्यूरिंग एमबीए सेशंस चाहिए, तो मॉम वुड बी लाइक ऑलरेडी लोन लिया हुआ है और कितना चाहिए, राइट? So that was a constraint that we always had. I think that my parents will say कि भाई जब एमबीए में पढ़ोगे तो पहले क्यों पढ़ना है, पहले क्यों पढ़ना, एग्जैक्टली, यस। वो है कि भाई चीजें इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है नाउ दैट you are preparing yourself for a job, now you are preparing for your MBA। और अब मतलब ये साइकिल ही हो गया ना, मतलब कि यू प्रिपेयर फॉर कैट, अब कैट के लिए भी एक प्री कैट बेचना चालू कर दिया आईएमएस ने, हमें
तो वो क्या होता है कि वो प्री कैट होता है जिसमें वो 1.5 साल पढ़ाते हैं बेसिक मैथ्स LRDI, फिर आपका कैट होता है, फिर कैट के बाद आपका इंटरव्यू होता है, फिर इंटरव्यू होने के बाद अब आप प्लेसमेंट के लिए पढ़ा रहे हैं, फिर धीरे धीरे एक एटिकेट्स वाला भी आ जाएगा कि मेस में कैसे बैठ के ये ये तो बहुत बहुत तुषार बहुत बड़ी बात कह दी। गो टू फ्रिटजी, गो टू आकाश, गो टू विद्या मंदिर। काफी 7 to 9th प्री इटजी कोर्स। हम लाइक यार समझ भी चल क्या होता रहा है। है। 1A2 एलिटिज्म था, मैं टाइम से था तो मेरे को अभी भी याद है मेरे टाइम का बैच का कुछ था, एलीट करके बोला करते थे, टाइम एलीट करके, मैं भूल गया हूँ बैच का नाम, ऐसे बेचा करते थे वो एलीट की 4 कैंपस से हो तो तुम एलीट हो, इससे हो तो नहीं होगा एलीट में। DR13 था शायद मेरे उसका एलीट बैच का, तो यार वैसा है। बट यूटिलाइज दीज ऑनेस्टली सेशंस, मतलब डू कम ऑन वीडियो कैम्स, ड्रेस वेल, यही होगा अभी नेक्स्ट 2 साल की, मतलब यू विल गेट इनटू दी सेशंस, आस्क डाउट्स, और कोई बोलेगा नहीं आके, मतलब नहीं बोलोगे, जो बोलेगा उसकी लग जाएगी भाई पहले वो। एंड वो पार्टनर वाला एग्जांपल, आई एम नॉट मेकिंग इट अप फॉर एनी ऑफ दोस सेशंस, like you are invited to all these dinners, you all are invited for these campus PPTs, and whosoever like ask more and more questions, like they will recall, at the end of the day it's human process, like they will know ki, oh, this person might have asked this question, so do you have any follow up questions, कई बार पूछते हैं वो लोग इंटरव्यू में, do you have any follow up questions about the yesterday's question on the in the pre placement, so वो सब देखो थोड़ा। बाकी यहाँ टेस्ट कर लो ना, अगर कोई सवाल गलत पूछ रहे हो या गलत तरीके से पूछ रहे हो, हम बता देंगे कि अरे पुट योर थॉट लाइक दिस इज द अनदर वे टू आस्क दिस क्वेश्चन, सो वो सब है। Yes, sir, I will try. अच्छा, anything else, Vinay, Bhavesh, Vishaka, if you want to ask something? No, sir. Thank you so much for the session, and I think so. Post the session, the insights really helped a lot. ठीक है, हाय शुभम, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स, एनीथिंग? नहीं यार, you guys are the expert of this field. I wouldn't hijack it. Okay, so thank you Vishaka, Bhavesh, Vinay for staying there, thank you Amit for helping, and thank you Shubham Tushar, always a pleasure. providing thank you Shubham for providing this opportunity। बाकी यार करो मेहनत, मजा आएगा अगर करके जाओगे तो, बाकी रिसोर्स बहुत है यार यहाँ पे, और अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन पहले करो जो दिया हुआ है। मतलब मैंने प्राइसिंग का डाउट आया तो मैंने मेरे को पता था कि अब प्राइसिंग की वीडियो नहीं देखी, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन अब वो जाके देखो वीडियो, मैंने मैट्रिक्स समझाए हैं उसमें सारे, तो वो सब चीजें हैं, बट हो जाएगा धीरे धीरे। मैं ये नहीं कह रहा आज ही रात को देखो, एक एक चीज देखो और पढ़ो, इक्विटी में जाके ब्रांड स्टोरी पढ़ो, टैगलाइंस पढ़ो, सबसे पहले HUL में कौन कौन से ब्रांड्स हैं वो देखो, PNG में कौन कौन से ब्रांड्स हैं वो देखो, एरियल मत बोल देना HUL को जाके, वो उसी समय रिजेक्ट कर देगा। और मैं बता रहा हूँ ये मैंने इतनी बार सुना है ना, मैं इसकी याद है, मैंने इतनी बार सुन चुका हूँ मैं ये चीज, और ये होता है हर बारी। लोग बोल देते हैं जाके डिटॉल की, डिटॉल बेच देंगे यार हम HUL को, HUL बहुत परेशान हो जाता है। डिटॉल रैकेट का है, मैंने यार नहीं पढ़ा है कोई भी ब्रांड का, लेकिन मैं जब भी कोई भी प्रोडक्ट यूज करता हूँ मैं पीछे देखता हूँ ये किसका है। बहुत बहुत बारी नहीं शायद, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक बारी नेस्ले केम टू कैंपस और उन्होंने पूछा अच्छा मैगी कहाँ का ब्रांड है, एंड देन देयर वाज अ पर्सन, मतलब ऑब्वियसली मैं नेम नहीं कर सकता, कैंपस का, मेरे कैंपस का नहीं है, मैं नेम नहीं कर सकता, उन्होंने बोला मैगी तो इंडिया का ब्रांड है। एंड सेम थिंग हैपेंड विद कोलगेट, कि कोलगेट टूथपेस्ट कहाँ का है, इंडिया का ब्रांड है। अरे यार ये मत करना, व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर अ कंपनी इंटरव्यू, नो दैट कौन सा ब्रांड कहाँ का है। इफ आई एम आस्किंग यू राइट नाउ कि ITC के मुझे 5 प्रोडक्ट्स नेम करो, देन यू शुड नो कि ITC का बिंगो है, ITC की सारी सिगरेट्स हैं, और ITC की मंगलदीप अगरबत्तियां हैं, ITC का आशीर्वाद है, यू शुड नो एवरीथिंग।
So do lot of research before getting into any company. FMCG का सब पता होना चाहिए कि आईटीसी का मार्केट शेयर कितना है, आईटीसी का कंपेटिटर कौन है, इंडिया में कौन है. हाँ, go ahead, go ahead. वैल्यू और वॉल्यूम से पता करके रखना दोनों में. मतलब एप्पल का वॉल्यूम मार्केट शेयर कम है, वैल्यू मार्केट शेयर ज्यादा है. यार एक एमबीए जब ऐसे बात करता है तो ही वो एमबीए कहलाता है कि मार्केट शेयर बाय वैल्यू, मार्केट शेयर बाय वॉल्यूम है. ये है. जिस मिनट तुम बोलो कि अगर मैं कभी इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं तो कहूंगा भाई बैठो, चलो यार हो गया इंटरव्यू. मतलब डिफरेंशिएट योरसेल्फ विद अदर्स. मतलब कैसे बोलूं भाई, मैं पीओटी भाई. मतलब सब कुछ वैसा ही चलता है लाइफ में, और जो बेस्ट होगा वो उसी को लेके जाएंगे यार. वैसे ही बहुत महंगा रिसोर्स होता है भाई एमबीए. तो वो है. बट एनी हाउ, गुड सेशन. काफी अच्छा वार्म अप हो गया है मेरा. बट अगले में यार अगर आओगे तो वीडियो ऑन करके ही आना भाई. मैं सच बता रहा हूँ, आई विल रिमूव पीपल. मैं इसलिए नहीं इस बार करा क्योंकि रूड लगता है वो. बट इट्स नॉट, मार्केटिंग इज नॉट दैट यू विल लर्न इन अ रूम. मतलब बाहर ही चलेगा वो सब कुछ. बाकी शोज देखो, आजकल तो शोज में इतनी सारी ब्रांडिंग हो रही है. सब चीजें देखो यार. मतलब मैं ये नहीं कह रहा जाके जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वही देखो सिर्फ. 10 शोज देखो. आजकल बिल बोर्ड्स भी बिक रहे हैं मूवीज के. मूवी के अंदर के बिल बोर्ड बिक रहे हैं और पैसे मिल रहे हैं उन लोगों को. मैं यहाँ पे आईफोन ऐसे उठा लूंगा, कल को मैं एक्टर हूँ, मेरे को पैसे मिलेंगे भाई. ये सब चीजें जानो किसको कौन कौन से एवेन्यूज है अपने प्रोडक्ट को बेचने का. मैं यहाँ सेशन ले रहा हूँ, कोई रिकॉर्डिंग, मैंने दरवाजे पे वो कुछ लकड़ी का ब्रांड लगा दिया, वो पैसे मिल रहे हैं भाई. अगर वो ब्रांड तुम्हें दिख रहा है किसी मूवी में तो वो पैसे मिल रहे हैं. अगर नहीं मिल रहा तो वो हटा देंगे उसको, वो ब्लर कर देंगे उस चीज को. और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये होता है. लास्ट 4 साल में जो भी आया है, अगर वो नहीं दिया है पैसा उन्होंने तो वो ब्लर्ड है. अरे वो क्यों दिखाएंगे? कोई हीरो आईफोन यूज कर रहा है, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? वो सैमसंग दिखाएंगे ना, सैमसंग पैसा देगा तो. भाई ये सब चीजें कर रहे हैं ब्रांड मैनेजर. जरूरी नहीं है कि सिर्फ साबुन ही बेचना है. अगरबत्ती चल रही है, मूवी चल रहा है, आजकल लोगों के पर्सनल ब्रांड्स हैं, लोग हायर कर रहे हैं ब्रांड उसको. 5-5 6-6 लाख रुपए ले रहे हैं महीने का एक बंदे की इमेज क्रिएट करने की. तो सारी चीजें हैं. जितना छोटा सोचोगे उतना ही छोटा रहोगे. बिल्कुल खोल दो भाई दिमाग एमबीए तक. तो यही है यार. बाकी तो यार काफी ज्ञान दे दिया. वैसे मेरे को इतना आता नहीं है सच बताऊं तो. वो फ्लो में मेरे को लगता है मैंने ज्ञान दे दिया है. बट तुम लोग पढ़ लेना यार मेरे से ज्यादा. ठीक है. ओके. एनीथिंग एल्स, एनी लास्ट कमेंट्स और एनीवन? I think Tushar, we are good. हाँ. Okay, thank you all for joining and stay tuned for all the other sessions and continue following my prep handles for all the updates. And thank you again. Bye. Thank you guys. Bye. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, Bye-bye. sir.